Assalamu alaikum, class 10th. Welcome to the next lecture of the chapter 2, programming in C. What we were discussing in the last lecture, we were discussing types of programming languages. What are programming languages? So what is a programming language? Let's revise it. Programming language is a set of words, symbols, and codes that enable humans to communicate with computers. It is near to human language, that is English, used to write different computer program. एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमें कंप्यूटर पे को अपनी मर्जी से ऑपरेट करने की इजाज़त देता है, जो कि हमें उसके साथ वे ऑफ कम्युनिकेशन की इजाज़त देता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जिस तरह के हम कंप्यूटर के साथ अपना काम कंप्यूटर के ऊपर करना चाहते हैं वो हम सॉफ्टवेयर इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। How many types of computer programming languages are there? Low-level languages, subdivided into machine language and assembly language. Then high-level languages, procedural languages, structured languages, and object-oriented languages. We have already discussed low-level languages, high-level languages. Now let's begin from procedural languages. Procedural language. Now, what are procedural languages? It is a type of programming language in which programs are divided into smaller parts. आपकी जो procedural languages हैं, इनके अंदर आप programs छोटे छोटे parts में convert कर देते हैं। एक part एक functionality के लिए, for example आपने एक calculator बनाना है तो addition के लिए आप एक part बना दोगे, subtraction के लिए आप दूसरा बना दोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप तीसरा बना दोगे, डिवीजन के लिए आप चौथा बना दोगे। इन छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं, इनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं, और इसी वजह से हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का भी कहते हैं कि इट हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, each module or each part of the program is responsible for the specific task. जो addition के लिए बनाया है वो सिर्फ addition करेगा, जो subtraction के लिए है वो subtraction करेगा, जो multiplication के लिए है वो multiplication करेगा, जो division के लिए है वो division करेगा। ठीक है, it is easy to design, modify and debug a program in procedural language since it provides better programming facilities. ऑब्वियसली जब हर फंक्शनैलिटी के लिए एक आपका टास्क, आपका मॉड्यूल ही अलग बना हुआ है, तो आपको उसको समझने में, उसके अंदर काम करने में आसानी होगी। इसकी जो एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की, उनमें एक है सी लैंग्वेज, जिस पे अभी हम काम करेंगे। हम उसी की प्रोग्रामिंग का ये स्टार्टअप है। Pascal, Basic and Fortran. These languages are now not available. These are obsolete languages. Pascal, Basic and Fortran, three of them. C is still used. Next are structured languages. Now, what are structured languages? Structured languages are a programming standard aimed to improving the clarity, quality, and development time of a computer program by making extensive use of the structure, control flow constructs of selection, if then else, and repetition, while for, block structures and subroutines. आपकी जो structured languages हैं उनके अंदर उनका जो एक क्लैरिटी है, उनमें एक क्वालिटी है, एक डेवलपमेंट है। आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है वो बहुत स्मूथ जाता है। आप उसमें तीन किस्म की फंडामेंटल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एक सीक्वेंस है, एक सिलेक्शन है, एक रेपिटेशन है। अच्छा, आपकी जो सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस में भी आती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम सीक्वेंस भी यूज़ करते हैं। जो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या है कि आपके प्रोग्राम एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलता है, एक प्रॉपर तरीके से चलता है। ऐसे नहीं होता कि आपने एक काम किया फिर
एंड पे चले गए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोग्राम एक सीक्वेंस से, एक तरीके से स्टेप वाइज चलता है। फिर इसमें दूसरे एडवांटेजेस सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। सिलेक्शन में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने उनमें से किसी एक को चूज करना है। जो ट्रू होगा वो आपके आंसर पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो फॉल्स होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपके पास सिलेक्शन अवेलेबल होती है, और सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स और स्विच की स्टेटमेंट्स। अभी आपके जब सी लैंग्वेज हमारी प्रॉपरली स्टार्ट होगी तो आपको इन लैंग्वेजेस, इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स का पता चलेगा कि इफ़ एल्स, एल्स इफ और स्विच क्या होता है। नाउ रेपिटेशन, repetition is a loop. Loops are used in C language, in Java, in many other languages loops are used. It executes a statement number of times. एक ही statement को बार बार repeat करना है अगर हमें, तो we use which loop sequence, right? So that is called repetition structure. अब लूप में आप कहेंगे कि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार क्यों रिपीट करना है। आपको फॉर एग्जांपल, आई गिव यू simple example of a table. If you want to write a table of a number, and obviously you, for example, I am writing table of a 2. आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपका ये 2 मल्टीप्लाई, ये सीक्वेंस चलता रहेगा जितनी नंबर्स तक आपने 10 तक टेबल को टाइप करना है, 20 तक करना है। आप प्रोग्राम में बार बार ये स्टेटमेंट लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, आप जस्ट एक लूप की स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब आपका लूप जो है वो आपके टेबल को वहाँ तक चलाएगा जहाँ तक आप चलाना चाहते हैं, 10 तक, 20 तक, 15 तक, and it will provide you sequence wise answer. So that is very difficult, very easy for you to write a loop sequence and write a repetition structure, right? So when you start programming and writing programs, you will come to know that how easy it is to use what? Use repetition structure. Now, next is object-oriented programming languages. Object-oriented programming language is the latest and the strong programming approach. Programs are written in the form of objects and classes. First of all, I'll want to tell you that object-oriented programming is the latest programming and most secure programming environment. आजकल लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं उनमें oops ही यूज़ हो रही है, ठीक है? और इसके कंसेप्ट को समझना, इसके साथ चलना और इसके ऊपर काम करना एक अच्छे प्रोग्रामर की आज ज़रूरत है। फाइन, सो it works in the form of objects and classes. Now, what is an object? Object is a thing that perform a set of activities. And what is a class? Class is a form of template in which functionalities of objects are defined. अब देखें ये क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है कि आपके पास अगर एक क्लास, आपने एक व्हीकल का, एक कार की फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम लिखना है। अब कार आपके पास जो है उसका उसके अंदर आप कार आपकी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फंक्शनैलिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, इसके कलर आ जाता है, इसकी इसकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं, और इसके पूरे जो एक है कि इसकी फंक्शनैलिटीज़, इसके कलर, इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके सब को लेके हम जब एक क्लास लिखते हैं, उस क्लास का नाम हम कार लिखते हैं। तो कार में एक व्हीकल टाइप, एक व्हीकल जो है वो ऑब्जेक्ट है, दूसरा व्हीकल, दूसरी कार टाइप दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक क्लास के अंदर हम डिफरेंट कार्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? Concept of reusability and ease.
latest programming languages are mostly based on concept of oops. अब क्या है कि आपने एक दफ़ा कार की एक क्लास बना दी, उसके अंदर आपने लिख दिया कि कार के अंदर ये फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं। अब आप किसी भी टाइप की कार के लिए उसी क्लास को यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर उसके थोड़े बहुत फीचर्स और ऐड करके। आपको दोबारा से सारा कुछ एक प्रोग्राम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी व्हीकल क्या होती है, कार क्या होती है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का थोड़ा सा हल्का सा मैंने कंसेप्ट आपको दिया है। आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा कि ऊप्स क्या होता है, क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इन्वायरमेंट से ही प्रॉपरली वाकिफ नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि ऊप्स क्या होता है, तो आप कम से कम उसे ये बता सकते हैं कि इट इज़ द लेटेस्ट and most secure way of programming, and it is based on objects and classes, right? So here your topic of programming language is completed. Next time we will discuss characteristics of high level languages and popular high language level languages, and depends upon the time that can we discuss compiler and interpreter next time. Okay, till then, thank you.